Hello, dear students. This is another video of class ninth chapter, The Fundamental Unit of Life. In the last class, we have discussed about the definition of cell. Now let's learn discovery of the cell. The discovery of the cell was made by an English scientist, what is Robert Hooke, in 1665 while examining a thin slice of cork under a primitive microscope. कर्क क्या होता है? जो पेड़ का जो आउटर लेयर जो छिलका होता है. एंड ही सॉ दैट द कर्क रिजेंबल ए स्ट्रक्चर ऑफ हनीकम. किस तरह दिखाई दिया माइक्रोस्कोप में? वही कर्क एक हनीकॉम जैसे छोटे छोटे बक्सेस इस तरह दिखाई दिया, like this. And here each little compartment, here box like compartments are called cells, and he called these small boxes like compartments as cells. और वही जो छोटे छोटे बॉक्स जैसे दिखाई दिया उसी को कहे, क्या कहे? cells. But what Robert Hooke observed as boxes were actually dead cells. जो रॉबर्ट हुक देखे जो बॉक्सेस को, वो सारा डेड सेल्स था. क्या था? डेड सेल्स. दैट मीन्स कॉर्क जो है किससे बना होता है? डेड सेल्स से बना होता है. आफ्टर दैट however for next 150 years the information about the cell was very less. उसके बाद सेल्स नेमिंग होने के बाद 150 ईयर्स तक सेल के बारे में कोई भी ऐसे डिफाइन नहीं किए. देन जैसे जैसे धीरे धीरे माइक्रोस्कोप डेवलप्ड हुआ, इट वाज ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ व्हाट वी कैन से इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप with higher magnification that the information about the structure and the functions of the cell become available. जैसे हायर मैग्निफिकेशन के साथ साथ माइक्रोस्कोप डेवलप हुआ, उस तरह सेल के बारे में, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में धीरे धीरे हमको पता चला. अगेन अबाउट इफ यू विल हैव क्वेश्चन अबाउट रॉबर्ट हुक, if anybody asks you who was Robert Hooke, then you can say English scientist. English scientist. Okay, now come about another scientist name Antony van Leeuwenhoek. Antony van Leeuwenhoek from 1632 to 1723. So what about Antony van Leeuwenhoek? He described cells in a drop of pond water using microscope. एक ड्रॉप पॉन्ड वाटर लेके माइक्रोस्कोप के थ्रू सेल्स को ऑब्जर्व किया. एंड ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू सी ए लिविंग सेल इन 1674. 1674 में सबसे पहले माइक्रोस्कोप के थ्रू कौन सा सेल दिखे? लिविंग सेल. बट रॉबर्ट हुक 1665 में जो ऑब्जर्व किए थे, कॉर्क के थ्रू जो सेल ऑब्जर्व किए थे, वो था डेड सेल्स. बट थ्रू द पॉन्ड वाटर जो लिविंग सेल ऑब्जर्व हुआ बाय एंटोनी वैन लीeuwenhoek, कब? 1674 में. एंड ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब आरबीसी
RBCs, that means red blood cells in humans and other animals. Okay, he was also first person to observe and describe RBC in humans and other animals, as well as sperm cells also. Not only RBC, sperm cells also he observed. Remember, guys. Okay? And after this basic finding, many scientists, workers studied various plants and animal cells and observed the structure of the cell. इनके बाद एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक के बाद बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट आए, बहुत सारे वर्कर्स आए जो कि सेल के बारे में डिटेल्स में गए. देन कम अबाउट सेल थ्योरी. सेल थ्योरी. Matthias Jacob Sladen, write down. Matthias Jacob Sladen, a scientist name, or we can say a German botanist, when in 1838 he observed that all plants are composed of cells of various types that form different types of tissues. क्या बोले मैथियस जैकब स्लेडन, क्या थ्योरी दिए सेल के बारे में, क्या बोले हमको. सबसे पहले देखो सेल थ्योरी के बारे में पढ़ रहे हैं. तो मैथियस जैकब स्लेडन एक जर्मन बोटनिस्ट थे और हमको क्या थ्योरी दिए हैं कि सारे जो प्लांट्स है वो बहुत तरीके का सेल से बना हुआ होता है, अलग अलग तरीके का टिश्यू फॉर्म हुआ होता है और उनका डिफरेंट फंक्शंस होता है. देन अनदर साइंटिस्ट थियोडोर शॉन. Theodor Schwann. He was also a German zoologist. A German zoologist in 1839. After 1 year of the theory of Matthias Jacob Sladen, here Theodor Schwann defined that all animals and plants are made up of cells. सारे animals और plants जो है वो सेल से बने होते हैं. And both of them combined their finding and proposed the cell theory. दोनों यहाँ पर मैथियस जैकब स्लेडन और थियोडोर शॉन दोनों सेल थ्योरी में बोले, क्या बोले कि प्लांट्स और एनिमल्स जो है, ये प्लांट्स के बारे में बोले और ये एनिमल्स के बारे में बोले. प्लांट्स के बारे में ये बोले क्योंकि ये बोटनिस्ट थे जो प्लांट रिलेटेड बोले, और ये जोलॉजिस्ट थे इसलिए एनिमल्स के बारे में बोले. तो दोनों का जो थ्योरी को हम अगर कंबाइन करेंगे तो दोनों से पता चलता है कि प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल से बना हुआ होता है. इफ़ यू विल हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस दैट explain the cell theory given by different scientists, so what will write according to the cell theory? First one, that is all living organisms such as plants, animals, all are composed of cells. जितना भी प्लांट्स हुआ, एनिमल्स हुआ, सारे किससे बना होता है? सेल से बना होता है. एंड द सेल्स में बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. यही जो सेल्स है ये एक तो यूनिसेलुलर भी हो सकता है या क्या हो सकता है? मल्टी सेलुलर भी हो सकता है.
Okay, and another point here, the cell is the basic structural and what is the functional unit of life. Structural and functional unit of life कहा गया है. In the third point, a cell has a mass of protoplasm with a nucleus. A mass of एक सेल में क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म. ए मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म क्या होता है गाइस? विथ ए न्यूक्लियस. एक सेल में प्रोटोप्लाज्म होता है और एक न्यूक्लियस होता है. देन नंबर डी, व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? Write in the comment. About the fourth point, the new cell the new cells are formed by the process similar to crystal formation. What? New cells, write down, are formed by a process similar to crystal formation. Okay, so here about the crystal formation, जिस तरह से crystal फॉर्म होता है वही जो प्रोसेस होता है क्राइस्टल फॉर्मेशन का प्रोसेस उससे सिमिलर होता है न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होना. जैसे कि व्हाट इज क्राइस्टल फॉर्मेशन? यू नो, व्हेन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स अरेंज इनटू ए रिजिड crystal that we can say lattice to minimize their energy state, or we can say it is the crystal formation, that means crystallization. So like this, the formation of new cells are similar to this process, or we can say crystal formation. So here again further the cell theory was modified by Rudolf Virchow. Here cell theory was modified by Rudolf Virchow in 1858. In 1858. So what will say Rudolf Virchow in 1858? He further modified the cell theory from pre-existing theory. जो पहले से जो थ्योरी ये लोग दिए थे सेल थ्योरी, इसको थोड़ा मॉडिफाई किए और क्या बोले सेल्स के बारे में? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स. ये तो बोला गया था. ऑल सेल्स arise from pre-existing cells of the same kind. What are the modified cell theory? So dear students, we'll continue, and if you think it is a little bit helpful to you, then please do like and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.